एंड थैंक यू। तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं सर, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और हेडलाइन। So all 3 have to come from you. And we'll talk about Bharat. The biggest challenge first up, if you have a Bharat narrative as a government, and we are looking at Azadi Ka Amrit Kaal, that means the challenge for you is continuity. How confident are you that you will be able to continue this narrative for the next 25 years? First of all, I'm glad कि आज आप सीधी बात कर रहे हो. Because by your own admission, I'm assuming कि I should be worried next time I talk to you whether सीधी हो रही है या टेढ़ी हो रही है. पर मुझे लगता है आज पूरे what's the language here? English, Hindi, what do you prefer? जैसे भी. I believe the world today, whether it's the political world, whether it's the business world, probably people at large also in most parts of the world recognize that India has arrived. They can very clearly see the India story, not only economic story, but as a nation. The story shows a lot of positivity in mindset. The story shows an aspirational billion wanting a better life for themselves, for their families. The story shows political stability, a huge thrust on a corruption-free society, an energetic, youthful nation which wants the good things of life, which is willing to experiment, which is willing to innovate, which is willing to take risks, which is not afraid of failure. And a nation such as ours, providing talent, providing the demographic dividend, providing a robust foundation on which they can see economic growth for the next 2 or 3 decades in the minimum. A nation which, even though it is $3.5 trillion economy today, every statistic and every mathematical formula that you may want to use will clearly show you upward of a $30 trillion economy when we celebrate 100 years of independence. When you put all of these together, very clearly you can see we are that one bright spot in the world, which will, going forward, not only change the lives or write the destiny of 1.5 billion people, but probably help the world economy also grow, because they would be dependent a lot on India, on India's growth story, and on India's market, demand from India, talent from India. And therefore, the top line has a very robust growth ahead of it. The bottom line is going to be exponential growth. And the headline is, India is going to be a global superpower in the next 25 years. बट अगर आप हिमाचल हार गए तो हेडलाइन चेंज हो जाएगा. मोदी फेल, मोदी सरकार फेल. इट्स अ गेम ऑफ नैरेटिव्स. हिमाचल इज गोइंग टू पोल्स टुडे. पिछली बार 44 थी, अब की बार. न्यूज दे रहे हो या व्यूज दे रहे हो, क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं. आई थॉट न्यूज वाज अबाउट रिपोर्टिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी विजय नहीं होगी, भारी मात्रा से विजय होगी. देखिए, जिस पार्टी के नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके कैंपेन भी करे वहां पे, और मेरे तो हैरानी होती है कि चुनाव हो रहा है गुजरात और हिमाचल में, और यात्रा हो रही है केरल में और तमिलनाडु में. मुझे लगता है वो तो अपनी पार्टी जोड़ने में ही अभी इतने व्यस्त है सभी जगह कि एक के बाद एक जैसे जैसे वो वेज आउट हो रहे हैं भारत की राजनीति से. I wonder whether they've given up on Himachal even before the elections. But पीयूष जी, हिमाचल जितने कई सारे हिमाचली हैं यहाँ, वो कहेंगे कि 20-25 साल से तो इट वाज सिंह वर्सेस धूमल. तो अभी प्रतिभा सिंह जी वहाँ हैं, वो कह रही हैं 45 सीट कांग्रेस जीतेगी. आज भी उन्होंने कहा उत्तराखंड के चुनाव के बाद कम से कम वो नैरेटिव खत्म हो गया कि पहाड़ों में ऑल्टरनेट इलेक्शन में दूसरी सरकार जीतती है. अब प्रो इनकम्बेंसी की भी वैल्यू हो गई है.
और मैं समझता हूं जैसे जैसे देश में जागरूकता आ रही है कि हमारे वोट की क्या कीमत है, जैसे जैसे लोगों में ये जागरूकता आ रही है कि एक निर्णायक नेतृत्व कितना जरूरी है, how important it is to have an honest government. After all said and done, you will see that the Bharatiya Janata Party across the country, one after the other, has not only shown pro-incumbency, but has focused itself on development works. And we have not fought any election trying to look at divisive opposition attacks and stuff like that. We focused on the work that we've done. Development and growth and prosperity has been our agenda in every election.